Keynote keynote speaker for today's session is Dr. Dhiren Kumar Pandey sir, who is currently serving as assistant professor in PG Department of Commerce, and he has a huge qualification. Sir has done MCOM, PhD, he has NET JRF, he has done CS Intermediate. His specialization is marketing and finance. Sir has around 29 papers published. Sir has attended more than 30 seminars. Sir has Sir has 2 edited books. Sir has attended around. Sir has 5 years of experience. Sir is the founding member of is the life member of Indian Commerce Association and founding secretary and life member of Indian Accounting Association Patna branch. Sir is the president of All India Central Excise Inspector Association Ansol Zonal Committee. Sir has been awardee BHU gold medal awardee of BHU of MCOM batch 2008 batch. And sir has huge round of experience, and few days back he has also hosted a very good international national webinar on research methodology. So sir has a huge experience of hosting such events. So now I request Professor Dhiren Kumar Pandey sir, Dr. Dhiren Kumar Pandey sir, to start with this session, and I welcome you, sir. Thank you, Dr. Saurabh Santanu. Thank you. Am I audible? Yes, sir, very audible you are. Good afternoon, all of you. At the very outset, I would like to congratulate the organizing bodies, DB College, Jayanagar, and the IAM, the Patna chapter. I would also like to thank Professor H.K. Singh sir, Faculty of Commerce, BHU, Dr. Nand Kumar sir, Principal of DB College, Dr. Shailesh Kumar Singh, the convener of this program, the coordinators, Dr. Santanu Saurabh and Dr. Vinita Singh, for giving me this opportunity to deliver my lecture on the topic sampling and sample design in the international workshop. So I would request all the participants to mute yourself. I have been given time for question and answer session also. You will be unmuted after the lecture is over. In between, please do not share your screens. Do not write anything on the screen, so that the PPT I have shared is visible to everyone and without any obstruction. Sir, PPT is visible. Today's topic, it is visible. Yes, sir, very, very visible, sir. So today's topic is sampling and sample design. Before starting with sampling, we would like to go through few terms that are important, that are related with sampling. First term is population. Population is the total number of elements about which the researcher is desiring information. It is the total set of all the elements that will be selected for a sample. It may be infinite or it may be finite. By a finite population, I mean to say that the population size is countable. You can count the population in numbers. For example, the list of students in a university or in a college, the number of employees in a company. And by infinite population, we mean that the population size is uncountable. You cannot estimate the size of the population. The best example of it is the number of stars in the sky. You cannot count. This is the population. When we collect information of all the elements of the population and conduct the study, it is known as census. But sometimes the population is so large that if you collect data from the whole population, it will consume much time as well as money. And if your research has some monetary constants or time constants, you will not be able to conduct
a census study. So you have to select a sample. And the process of selecting a sample is known as sampling. The sample is the part of the population and it represents the population with the same characteristics. When we come to sampling, sampling frame is also important. What is sampling frame? If we define population as about whom we are desiring information, then the sampling frame means from where we will get the access to those who will become the part of our sample, or a complete list from where you can select your sample. And this sampling frame contains the sampling unit. Sampling unit may be a country on the basis of geographical classifications. It may be a country, it may be a state, it may be a district, block, village, household, and sometimes even a single element is also considered as the sampling unit. The statistics. Statistics is the characteristics of the sample, such as sample mean, sample standard deviation. Similarly, the population characteristics are known as parameter. The sampling design is the framework that serves the basis of selecting the sample. So we will start about what is sampling. Sampling has already mentioned that it is the process of selecting the representatives from the population. You have defined a population about which you have to conduct a study, and from that population, since you are not able to conduct a study on the whole population due to time and financial constraints, so you will select a sample. And the process of this sample selection is called sampling. And it is well known that a good sample will always have mean equal to that of the population. That means it is the best representative of the population. You can see the diagram which I have shown in the slide. The population, you can see that various characteristics are available in the population, and in the sample few of them are selected. If you see, almost all the members of the population, representatives from all the members, all the groups have been considered in the sample. I can see someone is writing on the slide. Please don't write because it will obstruct the slide to others. So the sample should always represent the population. We should not leave any element from any group. If you eliminate some of the groups, for example, if you are conducting a study on regarding the on the students of an university, and you take a sample of only the boys, and you eliminate the girls. Girls are not in your sample. Then you cannot say that your sample is perfect, because the conclusions that you will draw based on that sample may be much more different from that of the population. So you must select all the members from all the groups, so that a proper representation is given by the sample. One example that everyone knows, जैसे कि अगर चावल आपने पकने के लिए दिया हुआ है किसी भगोने में या तसले में, प्रेशर कुकर की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको अगर चेक करना हो कि हमें मेरा चावल जो है पका कि नहीं, सो व्हाट विल डू, एक एक चावल के दाने को हम चेक करेंगे कि सिजा है कि नहीं, हम क्या करेंगे, वो जो चावल पक रहा है उसमें से 2-4 दाने उठाकर चेक करेंगे कि पकी है कि नहीं. अगर वो 4-5 दाने पका हुआ है, दैट मीन्स कि आपका पूरा चावल पक चुका है. अगर आप गलत सैम्पलिंग करते हैं, जैसे कि आपने किसी को भेजा वो चेक करने के लिए, उसने क्या किया, जो चावल पक रहा है उसमें से कोई दाना ना उठा के, जो ऊपर में ढक्कन के ऊपर कुछ चावल पड़े हुए थे जब आप चावल डाल रहे थे पानी में, वो चावल को देखकर उसने कहा कि नहीं चावल पका नहीं. तो ये कहते हैं इसको इनएप्रोप्रिएट सैम्पलिंग कहते हैं, क्योंकि वो सैंपल आपने पॉपुलेशन से उठाया ही, जिसके विषय में आपको इंटरेस्ट ड्रॉ करना था. Now, why sampling? I have already discussed that why sampling is used, because in order to save time and as well as money.
your research may not provide you much financial support, or it must have some time constant, so you go for sample study. And it is also well known that the results of the sample is always applicable to the population with some margin of errors. When we come to sampling design process, the first step is the defining the population. Second, determine sampling frame and sampling unit. Determine sampling process, determine sample size, execute sampling plan, and select sample. We will go through this process one by one. Okay. So first of all, the definition of the population. You should define the population about which you desire the information about which you are conducting the study. And unless and until you define the population properly, your objectives of the research will not be fulfilled. हो सकता है कि आप इतना अपने पॉपुलेशन को इतना बृहद बना लें कि उससे जो आप सैंपल कलेक्ट करते हैं उस सैंपल में जो आपके स्टडी के लिए जरूरी एलिमेंट्स है वो उसमें इंक्लूड ना हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपका जो पॉपुलेशन है दैट मस्ट बी डिफाइंड प्रॉपरली। एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, ABC Limited of Gaya wants to study the demand of its mixers and grinders. So it defines the target population as all women above the age of 20. All women above the age of 20, ये बहुत ही बृहद है, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं कहा कि महिलाएं 20 साल के ऊपर की सभी महिलाएं। जोग्राफिकल लोकेशन नहीं दिया गया कि कहा, इधर ऑफ बिहार, इधर फ्रॉम गया डिस्ट्रिक्ट। ABC गया की कंपनी है, हो सकता है इसका जोग्राफिकल एरिया जहाँ पे ये मार्केटिंग करती है, सेल्स करती है, वो गया ही हो। तो इसके लिए एक रेलिवेंट जो पॉपुलेशन है वो कहाँ की होनी चाहिए, गया की होनी चाहिए। और 20 साल से ऊपर की महिलाएं क्या सभी कुकिंग जानती हैं? क्या सबको पता है कि मिक्सर ग्राइंडर हमारे यहाँ आवश्यकता है? और अगर आवश्यकता है तो क्या सभी लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, आप दूसरा जो डेफिनेशन है वो ऑल वुमेन ऑफ द एज ऑफ 20 एंड नोज कुकिंग, ये थोड़ा रेलिवेंट हुआ, इसको प्रॉपर सकते हैं। लास्ट डेफिनेशन आप देखिएगा, ऑल वुमेन ऑफ द एज ऑफ 20 नोज कुकिंग एंड द हाउसहोल्ड इनकम ऑफ दैट हाउस इज मोर देन ₹10,000 एंड दे आर फ्रॉम गया। ये आपको एक पॉपुलेशन आपने डिफाइन कर दिया कि हाँ मुझे ये एलिमेंट्स चाहिए, मेरे पॉपुलेशन का ये डेफिनेशन है। क्या है? पहला, सभी महिलाएं जो 20 साल से ऊपर हो, प्लस उन्हें कुकिंग आती हो, ये ऐसे हाउस होल्ड से हो जिनका इनकम मोर देन 10,000 हो पर मंथ एंड दे आर फ्रॉम गया। क्योंकि आपका मार्केटिंग एरिया, आपका सेल्स एरिया अगर गया है तो आप वाराणसी जाके सर्वे करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का, अपना जोग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफिकल एरिया अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप बाहर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो ABC को स्टडी करना है उसके लिए इनका टारगेट पॉपुलेशन गया का ही होना चाहिए। सैंपलिंग फ्रेम, एक बार आपको पता चले कि मुझे गया जिला में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं जिनका इनकम 10,000 से ऊपर है, तो सैंपलिंग फ्रेम क्या होगा आपका? आपको ऑफिशियल या फिर कोई प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाना होगा जिनके पास ये लिस्ट उपलब्ध हो कि गया जिला में कितने ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनका इनकम पर मंथ 10,000 रुपए से अधिक है। ये लिस्ट आपको गवर्नमेंट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में प्राप्त कर सकते हैं या फिर बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो डेटा प्रोवाइड करते हैं। जब आपको सैंपलिंग फ्रेम आपके पास उपलब्ध हो गया कि लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड्स, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। सैंपलिंग यूनिट क्या होता है? सैंपलिंग यूनिट आपका यहाँ पे एक हाउस होल्ड हो सकता है जिसका इनकम 10,000 से ऊपर का है। उस हाउस होल्ड में जितने भी 20 साल से ऊपर की महिलाएं हैं और कुकिंग जानती हैं, आप सबको एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पता है कि उस पर्टिकुलर हाउस होल्ड में एक ही महिला है, 20 साल की है और 20 साल से ऊपर की है और कुकिंग जानती है, तो आप उसको ही सैंपलिंग यूनिट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी हाउस होल्ड में 2-3 महिलाएं हैं 20 साल से ऊपर, तो आपको बेहतर यही होगा कि आप उस हाउस होल्ड को ही सैंपलिंग यूनिट कंसिडर कर ले और उस घर में जितने भी महिलाएं हैं above 20 years and knows cooking, you can collect information from them.
टीचर सैम्पलिंग जो है आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव, टाइम, फाइनेंस और नेचर ऑफ द प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, जैसे सभी मेथड्स को पर्टिकुलरली डील किया जाएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम, फाइनेंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव और नेचर ऑफ प्रॉब्लम कैसे इम्पैक्ट करता है आपके सैम्पलिंग प्रोसीजर को। सैम्पलिंग प्रोसीजर्स दो प्रकार के होते हैं जो कि वेल नोन है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन यही है कि जो भी एलिमेंट्स आपके सैंपल में आएंगे उनके रिजेक्ट होने का या फिर एक्सेप्ट होने का जो चांसेस है वो इक्वल होता है, कोई बायस नहीं होता है। और ये माना जाता है कि रैंडम सैम्पलिंग जो हम लोग करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो एक बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसके अपोजिट में जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, वहाँ पे किसी भी एलिमेंट का सैंपल में इंक्लूड होने का जो चांसेस है वो इक्वल नहीं होता है। दैट इज बेस्ड अपॉन द चॉइस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द रिसर्चर। वो आप डिसाइड करते हैं कि हमारे सैंपल में कौन होगा कौन नहीं होगा। अब हम लोग एक एक करके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो टाइप्स हैं उनको देखें। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो सबसे पहला टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। आप जो होमोजेनियस पॉपुलेशन है उसमें से आपको सैंपल सिलेक्ट करना है, कोई क्राइटेरिया आपके पास नहीं है, मेल फीमेल अर्बन रूरल इनकम बेस्ड कोई ग्रुप आपका नहीं है। आपको बस ये पॉपुलेशन प्रोवाइड किया गया है, उसमें से आप कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं अपने सैंपल। ये कैसे सिलेक्ट करते हैं? 1 से 50 मेंबर्स हैं, या 1 से 1000 मेंबर हैं, या फिर 1 से 10,000 मेंबर्स हैं। बट हाउ विल यू सिलेक्ट the elements in your sample? There are 5,000 members in the population. You have to select only 500. And that process is to be random. It is very easy. There you can use the lottery system. लॉटरी सिस्टम में आप क्या करते हैं, छोटा छोटा चिट्स बनाएंगे वो 1 से 5,000 के नंबर्स का, उसको किसी बॉक्स में सफल कर देंगे, एंड आफ्टर सफलिंग यू विल पिक 1 to 500 चिट्स। ये चिट्स भी इंक्लूड करने का दो तरीका है, या फिर एक तो विद रिप्लेसमेंट या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट। बट विदाउट रिप्लेसमेंट इज प्रेफर्ड। विदाउट रिप्लेसमेंट यानी कि एक बार जो चिट आपने उठाया वो चिट का नंबर लिख के आप बाहर रख देते हैं, उसको उसी बॉक्स में नहीं डालते। इन दिस वे यू विल सिलेक्ट 500 एलिमेंट्स फॉर योर सैंपल। दूसरा तरीका आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं। एक्सेल में जाइए, रैंडम नंबर जनरेट करने का जो फॉर्मूला है वो फंक्शन में डालिए, रैंड बिटवीन नंबर्स 1 to, आपका पॉपुलेशन साइज है 5,000, 1,5,000, and it will generate a number. And when you drag it 500 times, it will provide you 500 random numbers. जो numbers है, you have already you have the sampling frame. You have numbered all the participants 1 to 5,000. For example, if you get the number 7, तो नंबर 7 के आगे जिस एलिमेंट का नाम है, जिस व्यक्ति का नाम है, आप उसको अपने सैंपल में कंसीडर करें। सेकंड नंबर इज 25, सो 25 के आगे जो एलिमेंट का नाम है वो आपके सैंपल में है। इन दिस वे 500 सैंपल साइज जो है आपके पास अवेलेबल होगा। ये सैंपल, ये जो रैंडम सैम्पलिंग मेथड है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दिस इज अनबायस्ड। इसमें कोई बायसनेस नहीं है, क्योंकि जो रैंडम नंबर आप जनरेट करते हैं या फिर जो चिट्स आप उठाते हैं उसमें आपका कोई भी चॉइस नहीं होता है। सभी का रिजेक्ट होने या एक्सेप्ट होने का चांसेस इक्वल है। लेकिन कभी होता है कि रैंडम सैम्पलिंग नॉट प्रॉपर। हो सकता है कि रैंडमली ही सिलेक्ट हुआ हो, बट किसी पर्टिकुलर सब ग्रुप जो है पॉपुलेशन का वो उसमें इंक्लूड नहीं हुआ। हो सकता है कि आपका जो स्टडी आप सैंपल के बेस पे करें वो प्रॉपर ना हो, उसका जो कंक्लूजन इन्फ्रेंस आप ड्रॉ करिएगा वो सही नहीं रहेगा। एग्जांपल लेते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। I have to study the impact of online teaching on students in my department. What is my population? My population is the students in my department. Now what is the sampling frame?
I have I feel sir is disconnected. He's there. Sir, please unmute yourself. You are on mute mode. Dhiren sir, you are on mute mode. So please unmute yourself. okay. Yes. Sir. Again, you are on So mute. I have the sampling frame. What is my sample? Yes. Sir. Am I audible? Yes, sir. You're audible. Audible. So I have the population of 230 students, and the sampling frame is available, the list of all the 230 students. And I decided that I will use a sample size of 20%, that is 46 students. So what will I do? I will number all the students from 1 to 230. Thereafter, I will generate 46 random numbers between 1 to 230. And these 46 random numbers will be my sample. It is that in simple random sampling, we may sometimes unknowingly miss some group. We may not include some of the representatives from some of the groups. That was, although unbiased, but you have made the mistake in selecting the sample. So, what you will do, if you want to study, if you want to take members from all the groups, for example, you can divide the population into male, female, income, middle income, or low income, urban, rural. You can also divide it on the basis of education. You can also divide your population based on geographical locations, based different schools, different districts, different blocks, different villages, different households. And you want representation from all the groups. So you will divide the population into different statums. So if you can see on the screen, I have divided the population into two parts, urban and rural. Once you divide, once you are able with the stratum, for example, urban and rural, now you can use a simple random sample for each of the stratums. You can see the urban, almost all the population is homogeneous, but the two stratums are heterogeneous. They are different from each other. That's why you divide the population into two groups, and then you can divide into two groups based on the objectives of your study, or based on the size of the population and the available groups in the population. And after that, you will again use the simple random sampling process after the strata is defined. And you can see the sample is now having representatives from both the groups. A stratified random sampling is of two types. First one is proportionate, second one is disproportionate. Proportionate meaning you have 1,000 members in the population and 400 are girls, 600 are boys. And you want representation from both the groups. You want girls also in the sample and boys also. But you want it in the proportionate. What proportion? The population 40% girls, so the sample should have 40% girls. And 60% boys in the population, so 60% boys also in the sample. Disproportionate, although you have different proportion, you 40% in the sample or 60% boys in the, sorry, 40% boys in the population and 60% girls in the population. But you will need a sample of equal size, equal girls and equal boys. Why? Because you need to study the impact on girls and boys. You need to compare the impact. When you need to compare on different groups, then you will need
to have equal number of members in the sample from both the states. We'll take an example for this. I have to study the impact of online teaching on male and female students in my department. So I am already decided that I have to study on male and female, impact on male and female. So I will divide my population 230 students into male and female, 80 girls and 150 boys. 80 girls means 35% are girls and 65% are boys. So I have two systems, girls and boys. And now I want equal participants from both. This is the case of disproportionate. I'm not concerned that 80 girls and 150 boys, so I will have the sample in proportion, same proportion, 35% girls and 65%. Yes, 65% boys. I need equal participation. So this is disproportionate. I will not consider the proportion in the population. Simply, I want equal participants from both. So I number the girls 1 to 80 and I number the boys from 1 to 20. And as per the simple random number, I select 23 random numbers for girls and 23 random numbers for boys. I have 23 boys and 23 girls. Next objective, I have to study the impact of online teaching on students in my department. My objective is to compare the impact between girls and boys, but I want that there must be proportionate representatives from girls group and proportionate representative from boys group. So I want a group. So I number the girls 1 to 80 and the boys 1 to 150. In this case, I generated 20 random numbers for girls and boys both. But in this proportionate case, I will generate Sir, your voice is all not audible. Dhiren sir. I feel he has lost connection, so he'll Am I be audible? reconnected. Yes, sir. Now you're audible. You need Am to I share. audible? Yes, sir. You need to share your screen again. स्क्रीन शेयरिंग एक बार फिर से कर दीजिए सर. Is it visible? No, sir, not yet. It is trying to. Now it is visible, sir. Now it is visible. You can continue, sir. Now. In the previous case, we noticed that in the previous case, we generated 23 random numbers for girls as well as boys because we needed equal participation from both. Because the objective of the study was to compare the impact between boys and girls. So whenever we have to compare, we need equal participation from both the groups. In this case, the impact of online teaching on students in my department means there is no classification, there is no comparison between boys or girls. So I can select any number of boys, any number of girls. But I want that both the groups must be represented in the proportion as they are available in the population. So in the population, we can see 35% girls and 65% boys. So I generate 16 random numbers for girls. 16 is 35% of the total sample size, 46, and 30 random numbers for boys from 1 to 50. Next is the cluster and multi-stage sampling. The population can be divided into clusters based on the characteristics. You can see in the diagram clusters in the population. These clusters can be countries, states,
blocks, Dharen sir, villages, Dharen sir, households. Yes. sir, if possible, switch off your video so your voice will be more better to us. There is कुछ प्रॉब्लम आ रही है आवाज आने में सर, तो अगर वीडियो बंद कर देंगे तो लोड कम हो जाएगा, तो शायद थोड़ी आवाज ठीक आएगी सर. अपना वीडियो आप ऑफ कर देंगे तब अगर बोलेंगे तो इट विल बी मोर बेटर, शायद मुझे लग रहा है लोड ज्यादा हो जा रहा है. Slide is visible. Yes sir, slide is visible. Now you can speak sir. It is very clear now. So the population can be divided into many clusters, and these clusters can be anything. You can divide your population based on the objectives of the study. We take an example of in the stage you can see that we selected some सर आवाज नहीं आ रही सर. और क्या रही है सर कट रही है आवाज, बीच में ब्रेक हो रही है. हेलो हेलो सर. यस सर, वॉइस ब्रेक हो रही थी, अब ठीक है सर, अब बोलो. Sir, audible, sir. नाउ यू आर ऑडिबल सर. Sir, yeah, okay, sir. यस सर, यू कैन स्पीक नाउ. सर यू कैन स्पीक नाउ सर. सर हेलो. यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल. डिस्कनेक्ट हो जा रहा बार बार. जी सर, अब आ रही है सर आवाज. हाँ, तो ये जो पॉपुलेशन में हम लोग देख सकते हैं कि we have 9 clusters in the population and we have selected 3 clusters from that. And how we select these 3 clusters? We select these clusters using the simple random sampling process. And after, we can also use these 3 clusters as the sample. We will take all the elements of the clusters and conduct the study. Or we can also do that we will minimize the sample size. How? We will select randomly some elements from these 3 clusters and that will be our new sample. So the image which you can see is not a single stage process. It involves 2 stages. In the first stage, you randomly select the clusters from the population, and in the third stage, in the first stage, you have selected the clusters from the population, and in the second stage, you select the elements from the clusters for the sample. There can be more than 2 stages also. That depends upon the population size and the objectives of the study. We will understand this on the basis of example. I have to study the impact of online teaching on students in my university. And in my university, I have 32 PG departments with a total 4,500 students. And we need a sample of 450 students. So now we have the cluster of 32 departments. And out of these 1 to 32 departments, I have to select only 8 departments. So how I will select these 8 departments? I will use the simple random sampling process. I will number the clusters to 1 to 32, generate 8 random numbers based on with the help of Excel, and the resultant is the sample. I can also process if I see that in these 8 departments there are n number of students and I need only 450 students. What I will do is I will number all the students in these 8 departments from 1 to n. For example, I have 1,000 elements in these 8 departments. I have 1,000 students.
So I will number 1 to 1000. And I will generate how many random numbers? I need a sample size of 450 students. So I will generate 450 random numbers between 1 to 1000. And the resultant will be my sample. Another example of this multi-stage sampling. We have to conduct a study on a large scale basis. So I select, my population is of 29 states. I first of all select 8 states from the 29 states. How these 8 states? Same process, simple random sampling. After that, these 8 states can be divided into many districts. Each of the states may have more than 5, more than 10 districts. So I have to select 5 districts from each of the selected districts. So how many districts I will have? I will have 5 into 8, 40 districts. Again, from the 40 districts, I have to select 5 blocks. Now I have selected 40 into 5, 200 blocks. 200 blocks is available to me. I will again divide it into several villages and select few villages from each of the blocks. So I select 8 villages from every block. This way, I will have a number of villages in my sample. Again, I divide that into several households. That village can be divided into several households. And I will select 25 households from each of the village. And this will be the final sample. So what will be my sample size in this case? I have selected 8 states, 5 districts from each state means 40 districts, 5 blocks from each selected districts means 200 blocks, 8 villages from each selected block. 200 into 8, 1600 blocks. Oh, sorry, 1600 villages. And from 1600 villages, we will select 25 households from each village. So 1600 into 25 will be how much? 1600 into 25. 40,000. This is the sample size which we will study. We use multi-stage sampling only in case of large scale studies, because you have already seen the sample size has arrived to 40,000. In a small study, we do not use multi-stage sampling. Next, the systematic sampling. Systematic sampling is also very easy and it consumes less time. You can see the image. We have a population of 26 alphabets and we have to select a sample of 5. First of all, out of the first 5 digits, first 5 alphabets, we will select any one alphabet randomly. And when it comes to random, we will use simple random sampling to select the first member of the sample. Here we have selected C. Randomly we have chosen C. And how many members I need in the sample? I need 5 members. So every nth member from this first chosen number, that is in this case we have C, and the nth number, how we derive? What is n? N is the total population divided by sample size. So population is 26 and the sample size I need is 5. So it will come to 5.1. So we will use fifth observation. After C, I have taken all the fifth observation. After C, the first fifth is H. After H, the next fifth is M. The next fifth is R, and the next fifth is W. This is a random process. We have not biased. It was not pre-decided that we will include C, H, M, R, W in the sample. Let us take an example. I have to study the impact of online teaching on students in my department.
and my department has 230 students. I will decide my sample size with 20%. You can take 10% also. This is just an example. And I will number all the students from 1 to 230. Now, what is n in this case? N is 5. 230 divided by 46. So I will choose every fifth number from the random number generated. So first of all, I will have to generate the random number, and that random number will be between 1 to 5. For example, we generate 3. So the next member of the sample will be 3 plus 5, 8. The next member, 8 plus 5, 13. Next member, 13 plus 5, 18, and so on. This way we will have 46 members in the sample. Now we come to non-probability sampling. Non-probability sampling, I already said that it is based on the judgment, on the convenience of the participants. The first method is the convenience sampling. The elements who are most conveniently available to the researcher form the part of the sample. This is the easiest way of collecting samples. You get out of your home, you go to any mall, you go to any departmental store, you go to any club, any association, or any other place of gatherings. Even you can catch any people passing by the streets, and you start collecting information. However, you cannot say that this sample will accurately represent the population. So convenience sampling is mostly used for pilot studies, and it is used only when you have less time and less money to spend. You will understand this convenience sampling with the help of my example. I have to study the impact of online teaching on students in my department. I will visit the library, playgrounds, canteen, common room, hostels, anywhere where I feel that I will get the students very conveniently. I will go. After going there, I will not interview everyone. I will feel that I can easily collect information from this person. I will collect the information from that person. And this way, I will interview those who are easily available to me. And my sample is ready. Take another example. ABC Limited of Gaya wants to study the demand of its mixers and grinders. And it has defined its population as all women above the age of 20, knows cooking, household income more than rupees 10,000 and are from Gaya. मुझे क्या करना है? गया में ही जो लोकेशंस है, मॉल्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, इको पार्क्स, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के दुकान है, वहां पे हम जा सकते हैं. वहां जाकर जो भी वहां विजिट करता है, जो मॉल्स विजिट करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस विजिट करते हैं, वो जैसे निकलेंगे उनको हम क्या करेंगे, उनको हम पकड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमको डेटा प्रोवाइड कर दिए. वी विल इंटरव्यू देम. उसमें हो सकता है कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे. दिस वे यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन दैट यू डिजायर फॉर योर स्टडी. सिंपल, इसमें कोई नंबरिंग आपको नहीं करनी पड़ी. आप उस समय जो मौजूद था वहां पे, वो आपके सैंपल में आया. जो मौजूद नहीं था वो सैंपल में नहीं आया. इट वाज योर डिस्क्रिप्शन टू इंक्लूड, होम टू एक्सक्लूड. तो ये एक बायस मेथड है. जनरली हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं. जजमेंटल सैम्पलिंग, ये सबसे कम यूज होने वाला सैम्पलिंग मेथड है, क्योंकि और सबसे ज्यादा बायस, ज्यादा नेपोटिज्म मिलेगी आपको. मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है हमारा सैंपल में हिस्सा नहीं ले सकता है, तो मैं इसे एक्सक्लूड कर दूंगा. मुझे फील होता है, मैं अपने जजमेंट के हिसाब से किसी को इंक्लूड करूंगा अपने सैंपल में. द सिलेक्शन क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ द स्टडी, so it is also called purposive sampling.
जो आपके पर्पस को फुलफिल नहीं करता है वैसे एलिमेंट्स को हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। ये डिसाइड कौन करता है? आई विल डिसाइड, बिकॉज इट्स माई स्टडी, आई नो द पर्पस वेल। और कभी कभी इसको जो है कन्वीनियंट सैम्पलिंग का एक्सटेंडेड रूप भी कहा जाता है। कैसे, वो हम अगले एग्जांपल में समझते हैं। I have to study the impact of online teaching on students in my department. My department has 230 students. I decide my sample size to be 20%, that is 46 students. मैं कहाँ जाऊँगा? मैं लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, कैंटीन, कॉमन रूम, हॉस्टल्स गया और अपने जजमेंट के हिसाब से मैं क्या करूँगा? आई विल इंटरव्यू सम ऑफ दोज हु आर अवेलेबल। मुझे लगेगा कि ये अवेलेबल बहुत होंगे, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि मेरे सैंपल में इसी को इंक्लूड करना है। हो सकता है एज ग्रुप के बेसिस मुझे लगे कि जो सामने वाला व्यक्ति है ये इस एज ग्रुप का नहीं है, सो आई विल डायरेक्टली रिजेक्ट विदाउट इवन आस्किंग हिम एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो हम लोग उसमें क्वेश्चंस भी रखते हैं। वो पहले हम पहला क्वेश्चन ही ऐसा पूछेंगे जिससे कि वो डिसाइड हो जाएगा ही विल बी इन माय सैंपल और नॉट। एबीसी लिमिटेड वाला एग्जांपल है हमारा। मुझे क्या चाहिए? ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 20 नोज कुकिंग, हाउस होल्ड इनकम मोर देन ₹10,000 and are from Gaya. So the researcher will visit the malls, shopping complexes, eco parks that are obviously located in Gaya, or any outside any electronic appliances too. Now, what is the purpose? We have already defined the population, so we can exclude some of the members from being included in the sample. How? By using purpose-specific questions. What questions? जो मॉल से बाहर आ रही हैं, we can easily see that who is above 20 years, who is below 20 years. तो ये तो एक जजमेंट हो गया हमारा कि जो 20 ईयर्स से ऊपर की महिला होगी हम उन्हीं को क्वेरी करेंगे। क्या क्वेरी कर सकते हैं? पहला, डू यू कुक? अगर आंसर है नो, वी विल एक्सक्लूड। आंसर है यस, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग मिक्सर्स एंड ग्राइंडर्स? नो, यू आर एक्सक्लूडेड। यस, यू आर इन। व्हाट इज योर मंथली हाउस होल्ड इनकम? ये क्वेश्चन जो है हम लोग बीइंग अ मार्केटर हम लोग इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि वंस that particular element is interested in buying mixers and grinders, it is upon you whether you can convert that potential customer into actual customer. So ये क्वेश्चन आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, व्हाट इज योर मंथली हाउस होल्ड इनकम। पहला जो क्वेश्चन था वो काफी है आपको एक्सक्लूड करने के लिए कि किसको सैंपल में इन करना है, किसको आउट करना है। मगर ये जजमेंटल सैम्पलिंग बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। कोटा सैम्पलिंग ठीक उसी तरह, इट इज सेम एज द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सिंपली स्टेटास तक तो सिमिलर है, लेकिन जब व्हेन यू सिलेक्ट द एलिमेंट्स इन द सैंपल वी यूज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोसेस आफ्टर वी डिसाइड द स्टेटस। लेकिन इस केस में वंस यू प्रोवाइड द कोटा और डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स, यू विल यूज कन्वीनियंट और जजमेंटल सैम्पलिंग। बस यही बेसिक डिफरेंस है कि उसमें रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं हम स्टेटा डिफाइन करने के बाद, इसमें स्टेटा डिफाइन करने के बाद हम लोग कन्वीनियंट और जजमेंटल सैम्पलिंग यूज करते हैं। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? मेल, फीमेल, अर्बन, रूरल, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, एज, इनकम और एरिया स्पेसिफिक क्राइटेरिया। I have to study the impact of online teaching on male and female students in my university. How many students in my university? 4,500 is the population, with 1,800 girls and 2,700 boys. So the two status are girls and boys, male and female. What sample size I have decided? 450 students, and I want equal participants from both the groups. What I will do? Once the data is decided, we will use convenient sampling or judgmental sampling. We'll go to the canteen, common rooms, playgrounds, hostels, and interview those who are easily available. This way, you will have the sample ready for the study.
स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब वो बर्फ के पहाड़ से एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा गिरता है तो वो बहुत छोटा होता है साइज में, लेकिन वो जैसे जैसे नीचे धरातल पे आते रहता है तो वो अपने टेम्परेचर के कारण और भी बर्फ अपने में लपेटता आता है। वो जितना छोटा ऊपर से गिरता है, नीचे आते आते एक बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान बन जाता है। तो ठीक उसी तरह हमारा ये सैम्पलिंग, शुरू में आपको यू विल हैव नो एलिमेंट इन योर सैम्पल, you will have to work very hard to find the first element for your sample. ये first element कैसे मिलेगा? How will find and why it is difficult? It is difficult because the purpose of the study is very sensitive, and you will not very easily find the sample elements. For example, HIV positive cases, you will not get available list of HIV positive cases in your district. You have to contact some volunteers who are involved in helping HIV positive patients. If they agree, they will provide you a name, and that name, if that person is ready to provide information to you, he will be the first member, first element in your sample. You will have to convince that person that while visiting the hospital, while your treatment, have you undergone, have you contacted any other person who is suffering from HIV positive? And if he agrees, he may provide a reference to him, and he will again go to him. It may be the case that he can provide the names of 2 or 3 or more persons. You visit all the references, and those who agree to provide the information, they will be in your sample. And they may also again refer you some names, and you will have to visit them and convince them to provide the information. If they provide the information, they will be in your sample. Similarly, rape or sexual abuse victims will not easily get the data regarding these cases. Or you can also take illegal cases, illegal immigrants. आपको इजीली ये लिस्ट नहीं मिलेगा कि कौन इलीगली आपके देश में रह रहे हैं। आप वेस्ट बंगाल पे एक स्टडी कर रहे हैं और आपको स्टडी करना है कि यहाँ कितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं। कोई बहुत इजीली नहीं कहेगा कि मैं इलीगल हूँ। You will have to suffer with a very small size of sample. या फिर हो सकता है कि आपको समय भी बहुत ज्यादा लगे, क्योंकि वो बहुत इजीली आपको सैंपल के एलिमेंट्स अवेलेबल ही नहीं होंगे। सिंपली ये चेन बेसिस पे होता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है, इट कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर मतलब आपने एक पहले एलिमेंट को सिलेक्ट किया, पहला एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का रेफरेंस मिला, दूसरे एलिमेंट से फिर एक रेफरेंस मिला, ये लीनियर चलता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले एलिमेंट से आपको, जो इमेज देखिए मैंने दिया हुआ है स्क्रीन पे, पहले एलिमेंट से आपको 3 रेफरेंसेस मिले, फिर तीनों से आपको 2 से 2 रेफरेंसेस मिले, और 1 से 3 रेफरेंसेस, यानी 6 रेफरेंसेस मिले। लेकिन उन 6 रेफरेंसेस से आपको एक भी रेफरेंसेस नहीं मिले। लेकिन बाकी जो दूसरे तरफ है, उनसे 4 रेफरेंस से जैसे आप जाते हैं तो उनसे 6 रेफरेंसेस ऐसे। तो ये स्नोबॉल की तरह आपका जो है वो शुरुआत हो रहा है एक मेंबर से, और धीरे धीरे वो सैंपल साइज आपका बढ़ता जाएगा। इट कंज्यूम्स टाइम, इट कंज्यूम्स मनी, क्योंकि इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है, आपको एक स्पाई की तरह डेटा कलेक्शन करना पड़ता है। एक एग्जांपल इसका लेते हैं। आई हैव टू स्टडी द मेंटल हेल्थ ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट्स। The official list is not available. The official list not available, that means you don't have any sampling frame. Sampling frame है नहीं आपके पास, तो डेटा कैसे कलेक्ट होगा? आपको ट्रेस करना होगा पहला एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कैन बी अ पेशेंट और अ वॉलंटियर। वॉलंटियर जो है आपको पहले एलिमेंट तक पहुंचाएगा, यानी HIV पॉजिटिव केस तक। After interviewing the first element, we may get to know about 1 or more elements known to him, and then I will follow the chain and generate a sample. It's not an easy task.
ये बहुत ही सेंसिटिव स्टडीज के लिए कंडक्ट किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि बहुत कोई एलाइट क्लब है आपके देश में, उस एलाइट क्लब में जो प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं मेंबर्स को, आपको उसके बारे में कुछ रिपोर्ट करना है। कैसे करिएगा? उसके जो इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस आप कर ही नहीं सकते हैं। आपको किसी तरह से एक मेंबर, उस क्लब का ऐसा मेंबर जो कि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार होता है, ऐसा मेंबर ढूंढना पड़ेगा। वो कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेगा, प्लस वो कुछ मेंबर्स का भी आपको लिस्ट दे सकता है कि ये मेंबर्स हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट हिम। दिस वे यू विल अप्रोच टुवर्ड्स सिलेक्शन ऑफ योर सैंपल इन दिस केस। ये थर्ड स्टेज हमारा जो था सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस का, वो जो सिलेक्शन ऑफ द सैंपल प्रोसीजर, वो हमारा खत्म हो गया। नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। वी मूव टू द फोर्थ step, determine sample size. Determining sample size. The sample size is the most important part of your study. हमारा सैंपल साइज कितना होना चाहिए डिसाइड करना है। आपका पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा है, हो सकता है इनफाइनाइट हो, लेकिन सैंपल कितना लें कि हमारा वो जो स्टडी है वो रेलिवेंट हो, जो हमारा इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किया हमने वो सिमिलर टू द पॉपुलेशन। कैसे? Sample size depends upon the population size, margin of error, confidence level, and standard deviation. We will discuss the formula after this slide. Population size, I have already said that it may be finite or infinite. Finite के लिए अलग formula use करते हैं, infinite के लिए अलग formula use करते हैं। Infinite में sometimes we take the population size as 1 lakh. जहाँ population infinite होता है, बहुत सारे cases में population formula में place करने के लिए population size को मान लिया जाता है कि 1 lakh. Margin of error. Margin of error is the level of precision required. It may be from 2% to 5%. Confidence level is the probability that the margin of error contains the true proportion. Confidence level जो confidence interval होता है हमारा 95% पे, plus minus 1.96, 99%, 90%. जनरली हम लोग 3 कॉन्फिडेंस लेवल पे स्टडी करते हैं, 90%, 99% और 95%. सैंपल प्रोपोर्शन. सैंपल प्रोपोर्शन इज द एक्सपेक्टेशन फॉर द रिजल्ट. सैंपल प्रोपोर्शन जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है कि वो एक तरह का आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, सैंपल साइज फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन. सैंपल साइज इज इक्वल टू सी स्क्वायर into sigma square divided by e square, where c is the critical value of the normal distribution. For example, at a confidence level 95%, alpha will be 0.05 and the critical value is 1.96. Sorry, plus minus 1.96 in case of two tail. जहाँ one tail होगा वो इधर पॉजिटिव वैल्यू होगा, इधर नेगेटिव, और टू टेल में रेंज फ्रॉम प्लस 1.96 to minus 1.96. Sigma is the standard deviation, and how we'll calculate this? This is on the basis of past studies, or you can even conduct a pilot study to find out the standard deviation. And E is the margin of error that I have already said. It will be around 2% to 5%. That is acceptable. Margin of error is the difference between the population mean and the sample mean. For finite population, this was for infinite, where you are not having the population size. For finite population, what is the difference in the formula? We have multiplied n, that is the population size, and we both the numerator and the denominator both have changed. So the formula stands at n, that is the population size, into critical value of the distribution, c square, and the standard deviation of the population, that is sigma square, divided by c square into sigma square plus n minus 1 into e square, that is the margin of error.
We will see one example for both. In the infinite population formula, we have critical value C square. We are taking 1.96 because we are studying the impact at 95% confidence level. Okay, so the formula will be 1.96 square into 0.5. We have assumed that the standard deviation is 0.5. We have taken this assumption is based on previous studies. Okay, we have just assumed in this example. It may be more or less. Then the margin of error, we have taken 0.05, that is 5%. So what is the sample size for infinite population? 384. And if we take a population size of 5,000, the sample size changes to 357. With the same data, that is 95% confidence interval, 0.05 error of margin of error, and 0.5 as standard deviation. So for a finite and for infinite, sample size is different. However, this difference actually, if you put 1 lakh instead of 5,000, you will not get much difference. So in most of the cases, we also use this finite population formula when your population is infinite. How? You will assume n as 1 lakh. Assuming 1 lakh as the population size in case of infinite population. Most of the studies will find that they have assumed n as 1 lakh because there is not much difference. In some formulas, you will find that I have given in this formula standard deviation. In somewhere you will find it will be P into Q. What is the P? P is the sample proportion that is expected to be around 50%. Most of the studies we consider P as 50%. So we take P as 0.5. And what is the Q? Instead of sigma square, we use P into Q. P is 0.5. And what is Q? Q is 1 minus P. You can also test the formula by taking the P as 0.25 and the Q will be 0.75. However, it is not necessary that you will have to use this sample size formula. There is a rule of thumb for sample size that if you have 5 variables, it depends upon the study. If you have 3 variables, if you have 3 variables, you can consider 20 respondents for each of the variables, or 15 also, 10. If you consider 10 respondents for each variable, you will have a sample size of 30. Generally, the respondents between 10 to 20 for each of the variable is sufficient. I have listed some examples. If you have 5 variables, you can go for any sample size between 50 to 100. If you have 20 variables, you can opt a sample size of either 200, 300, or 400. Means for each of the variables, you need at least 10 to 20 respondents. If you have 5 variables, you can choose 50 to 100. The last stage is to execute the sampling plan that you have executed, that you have prepared in previous steps from 1 to 4. And based on that sampling plan, you will follow the rules and start selecting the sample. If you are following probability sampling, you have to strictly follow the rules for each of the sample elements.